to this very important discussion on the single national curriculum. I also welcome to all the audience and participants, those who are keen to learn and understand and share their thoughts on the educational policies and particularly the single national curriculum, which is being developed by the different stakeholders under the umbrella of Ministry of Federal Education and National Training. So this webinar will be bilingual, probably as there is no one from the international community who cannot understand Urdu. So we'll try to make it bilingual for the understanding of larger audience. Ladies and gentlemen, thank you so much. And let me very briefly introduce the background of this webinar. As 24th of January is considered as the United Nations produced by the United Nations General Assembly as the International Day for Education. And without education, so there is no concept of sustainable development and achieving sustainable development goals. Education is the key towards more justice and sustainability in the societies. Particularly during and after the COVID-19 pandemic, the importance of education has been manifold. Educational crisis during the extreme time, and particularly during this time of time frame, when UNESCO is celebrating International Education Day under the theme Changing Course, Transforming Education. So SDPI has realized the importance of this very important subject, and this year will be focusing on the prospects and challenges of the single national curriculum, which is being produced by the Ministry of Education for grade 1 up to grade 12. As in Pakistan, there are three sort of education systems existing. For example, the government education system, the private schools, and there is a variety of private school system of education, and then the religious education system, which includes the madrasas and the Nizami. We try to engage all the relevant panelists and key stakeholders, those who are engaged in this single national curriculum development initiative, and those who are not actually engaged by the concerned ministry, and we'll discuss the pros and cons and the challenges which are associated with this very important actually topic. As Pakistan is a diversified society, we have different topography, a variety of population. We have 4 seasons. We have officially on Radio Pakistan, we announced different program in 17 languages. And in a society where there is a huge variety of languages, there is a huge variety of cultural disparity, and interfaith harmony is also another umbrella. So we'll try to learn and understand that how this single national curriculum will be very valuable to increase the connectivity and develop interfaith, intercultural harmony in the country like Pakistan. So thank you very much. Let me very briefly introduce my panelists. So we'll be having Dr. Abid Suleri, who is the Executive Director of Sustainable Development Policy Institute, for his valuable input and thoughts regarding the policy framework and how we can further move under this single national curriculum. We have Professor Dr. Shahzad Ali Khan Sab, who is the Vice Chancellor of Health Services Academy and who is the member of NCOC. We'll try to learn from him the health perspective and cognitive perspective of the children, that how important it is to learn and grasp the knowledge in a specific single national curriculum format. We have Mr. Rafiq Tahir, who is former Joint Advisor for Education and a member of National Curriculum Council, who actually is the founding member of the NCC,
He'll be sharing the processes and the beginning and initiative of this single national curriculum component. We have also Mr. Sohail bin Aziz, who is Deputy Director of National Curriculum Council, and actually very much busy nowadays to hold an important conference. And thank you so much, Mr. Suhail, for joining us, as you are the very relevant person to discuss this single national curriculum. Ladies and gentlemen, we have two distinguished professors, Dr. Afshan Huma, who has earned her PhD in curriculum development from Michigan State University, and she is the assistant professor and head of educational policy planning and leadership at Allama Iqbal Open University. Last but not the least, Dr. Nargis Abbas from University of Sargodha. She's assistant professor over there, and she has done her master's in mathematics and PhD and postdoc in education from France, and she has done extensive work on primary education. So with this very brief introduction of the panelists and the background, let me invite very first to share, to welcome the panelist formally. So, Ms. Aisha, do we have Dr. Abid? Has he joined us? Probably he is in another meeting and maybe joining soon. Okay, let's move further. Miss Aisha Ilyas is here. Miss Aisha Ilyas is visible. जी डॉक्टर मिस आयशा इज देयर. मैं उनसे जानना चाह रहा था कि डॉक्टर आबिद ने अगर हमें ज्वाइन कर लिया है तो वो बात करेंगे, बट आई थिंक वो बाद में हमें ज्वाइन कर लेंगे. थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम इनपुट लेते हैं डॉक्टर अफशान हुमा से कि डॉक्टर अफशान, आपका पीएचडी है ही करिकुलम डेवलपमेंट में, और कैसे देखती हैं आप कौन से पैरामीटर्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई भी करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, खा वो प्राइमरी लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है, हायर लेवल पे है या यूनिवर्सिटी लेवल पे है. सो हमें थोड़ा सा बताइए कि कौन से पैरामीटर हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या एसएनसी के अम्ब्रेला के अंदर ये फिटेड बैठते हैं. और हम हमारे साथ चूँकि जुनैद साहब भी हैं. जी, ओवर टू डॉक्टर अफशान हुमा. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Thank you, Shahid Saab, and thank you SDPI for having me in this panel. मेरी क्योंकि पैरेलल एक बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज की मीटिंग भी चल रही है, तो मुझे किसी वक्त भी अंदर बुलाया जा सकता है, लेकिन जितना भी टाइम मैं यहाँ दे सकूंगी, आई विल कंटिन्यू विद दैट. Sure. I'll come straight to the question that you have posed. While talking about curriculum planning and then curriculum review and then curriculum change, we talk about it in three different dimensions. When we are saying curriculum planning, that's the very basic thing to do, and we always begin with a need assessment and with the three levels of assessment, which is local, national, and global. Needs for which we are planning a curriculum, what are the national needs, and then what are the global needs. In 21st century, when we are looking at our curriculum at national level, as in case of single national curriculum, it was done. The process was initiated, I think, back in 2017. And at that time, the word single was not attached to it. It was attached later on. Initially, it was a curriculum review process for primary and elementary education. And I was there in the initial process, but later on I was not in the process anymore. Anyway, in the beginning, how we started it was exactly to do the basic need assessment. And we started off with the federal institutions curriculum only. So we only focused on what is required to be changed and why is it required. So we had teams developed like in any other country whenever a curriculum is being reviewed, because we are in 21st century, we are not beginning from the zero.
we are reviewing our existing curriculum and then bringing a curriculum change into it. So we started off just like that, as in any other country or as in books we study, that we will have teams who will look at different dimensions of the curriculum. When we talk about primary education, it's a holistic curriculum which is mainly focused to the child development in these years up to the age of 10 to 12 years. So we started off looking at all the subject areas as they were described in the national curriculum books, which were developed initially in 2006. And we were looking again on those in 2017. So we started off with that, and we collected some materials from local publishers as well. Because in Pakistan, in different education systems, different textbooks were being adopted. And then we had some of the local private schools which were adopting some foreign curriculums as well. So we got hold of those books as well. And then we had some exemplary documents. The ministries people themselves brought them in, and they said that these are some exemplary curriculum for primary education from around the world. So this is the first stage when we start off in this century, when we start off looking at any stage of curriculum, primary or elementary or secondary. तो हम क्या करेंगे, हम local, national और global documents को देखना शुरू करेंगे, and we will have a need assessment. That is a missing part in Pakistan. We usually do not have a need assessment. We usually have roundtables. We have seminars, conferences in which people sit in the rooms, but we do not get information from the field. और ये एक मुझे missing link लगता है, पहले भी लगता था और अभी भी लगता है. In 2006, I remember there were some district dialogues held जब वो curriculum बना था. इस दफा तो वो dialogues वाला चीज हुआ ही नहीं. We never had a dialogue from the field. So all we had was a centralized approach to look at it. और जैसे मैंने कहा, we began only for the federal level. So we started off like this. लेकिन जब इसको national level पे लेके जाना था, and when we had the tagline attached to it, which is single national curriculum, तो फिर तो बहुत जरूरी था that we could have feedback from the field from all provinces and districts. But we never had that, and that's a missing link in the process. I will close my talk at this कि दो तीन चीजें होती हैं बड़ी important. बच्चे का age, the mental level that we are talking about, the locale from where the child is coming from, the context where the child is coming from, and the local, national and global needs. तो हमें root से लेके आगे लेके जाना होता है. If we do not have the context of the child with us and we are only looking at national and global needs और हमने local को छोड़ दिया, तो ये एक बहुत बड़ा missing link होगा जो कि मुझे नजर आ रहा है इस process के अंदर. So I'll stop here, and if any further question will be asked, I'll elaborate more. Thank you so much, Dr. Afshan, for setting the ground. आपने बहुत अहम बातें की हैं कि जो लोकेल है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सारे प्रोसेस में. ग्लोबल जाना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने की आपने बात की है, बच्चे की डेवलपमेंट की बात आप कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि शुरू में ये करिकुलम रिव्यू प्रोसेस कमेटी थी या काउंसिल थी, जो बाद में सिंगल नेशनल करिकुलम में ट्रांसफॉर्म हुई, कन्वर्ट हुई. इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद बिन अजीज साहब. इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, जुनैद साहब आप हमारे साथ हैं? सॉरी, सोहेल बिन अजीज साहब. सोहेल साहब आप हमारे साथ हैं? सोहेल साहब, मेरा ख्याल है कि सोहेल साहब हैं तो हमारे साथ, लेकिन वो ड्राइव कर रहे थे, कहते हैं मैं कुछ देर में अच्छा तब तक हम चलते हैं. मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी सोहेल साहब आप हमारे साथ? जी, मैं आपके साथ हूं जी. थैंक यू सो मच. हमें डॉक्टर अफशान ने हमारे साथ कुछ पॉइंट शेयर किए हैं. इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ डॉक्टर नरगिस भी हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में पढ़ाती हैं,
اچھا شاہد صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ابھی بات کر لوں کیونکہ وہ ہم یہاں پہ کچھ ارینجمنٹس میں تھے, اگر آپ مناسب سمجھیں. جی جی پلیز کنٹینیو کیجیے سہیل صاحب. جی ہمیں یہ بتائیے تھینک یو. کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کا اوریجن, اس کی فلسفی کیا ہے؟ اور جیسے ڈاکٹر افشان نے کہا کہ کریکولم ریویو پروسیس کمیٹی تھی تو وہ بعد میں سنگل نیشنل کریکولم میں آ گئی, اور پھر سنگل نیشنل کریکولم میں آپ نے کن سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا, اور جو ابھی تک کی اچیومنٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل تھینک یو آپ کا جو ادارہ ہے SDPI اینڈ آل دا پیپل ہو آر انوائٹیڈ ٹوڈے. بہت اہم بات یہ کہ چاہے کسی بھی اینگل سے لوگ کام کرتے رہیں اس ملک میں تعلیم کے لیے کسی نہ کسی انداز میں, دے آل ڈیزرو کنگریچولیشنس کہ انہوں نے اپنے تئیں تو پوری کوشش کی ہے. بٹ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں بہت سارے منصوبے, بہت ساری اسکیمز جو بنتی رہیں, وی آلویز تھنک کہ اگر وہ عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا ان کو, اگر وہ اپنے جو اس کے لیے خواب دیکھا گیا تھا اس تک نہیں پہنچتی تو وہ ساری ایفرٹس بیکار چلی جاتی ہیں. بٹ ان دس کیس وین وی ٹاک اباؤٹ سنگل نیشنل کریکولم, یہاں پہ سچویشن ہمیں تھوڑی سی بہتر نظر آتی ہے اور اس پہ ہم پراؤڈ فیل بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں 2006 کی ایفرٹ کریکولم کی, بہت بڑی وہ ریفارم تھی, بہت بڑا کام ہوا تھا. بٹ وین یو لک ایٹ اٹ کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوتے ہوتے, ابتدا ہوتے ہوتے تقریباً 5 سے 6 سال لگ گئے تھے, اور اس طرح سے اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے یعنی اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ 2022 میں ہم بیٹھے ہیں تو کچھ کلاسوں کے کریکولم پہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی ہے. سو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پلان بنایا گیا تھا, جس انداز میں کریکولم ریفارم سٹارٹ کی گئی, بیسک پرپز یہی تھا کہ لوگوں کو نمبر 1 تو یہ کہ فرق پتہ چل جائے. اتنی بڑی ڈیبیٹ پاکستان میں کریکولم پہ حالیہ برسوں میں نہیں ہوئی کبھی, تعلیمی اصلاحات پہ اتنی بڑی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, خواہ وہ سوشل میڈیا پہ ہو, الیکٹرانک میڈیا پہ ہو, ہر جگہ ہو. سو وہ ہوتی رہی اور لوگوں نے اپنی رائے دی ہے. ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں, کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات رہے ہیں, اور وہ شاید اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ وہ خود پروسیس کا حصہ نہیں تھے تو اتنی ڈیٹیل سے اس کو نہیں جانتے تھے, یا شاید ہماری کہیں کوتاہی ہو کہ ہم اس طرح سے نہیں ان کو بتا پائے. سو اینی ہاؤ ایشو ہے کہ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ پتا چل جائے کہ وہ کتاب کو نصاب نہ سمجھیں. جو کریکولم ہے وہ نام ہے ایک بہت بڑی ریفارم کا جو ہم کر رہے ہیں, اس میں آپ کے سٹینڈرڈز ہیں, اور اس کے بعد ٹیکسٹ بکس ہیں, اور آپ کی ٹیچر ٹریننگ ہے, اور اس کے بعد آپ کی اسسمنٹ ہے. دیٹ از the بیک بون آف لرننگ, جس کے بغیر آپ جب بات کرتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں کہ روٹ لرننگ ختم ہو جائے گی اور کنسپچل لرننگ آ جائے گی, تو وہ چیزیں ہونا ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی اسسمنٹ کو بہترین بنائیں. سو ان تمام چیزوں پہ باری باری ایک ایک کر کے کام شروع ہوا, اور دیکھیے آپ کے کتنی جلدی ہم نے جو پری 1 to 5 کا جو کریکولم ہے اس کو کمپلیٹ کیا. اب ہم 6 to 8 کا, اور بلکہ 6 to 8 کا بھی کریکولم ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. کریکولم اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہاں میری مراد سٹینڈرڈ سے ہے, اور اس کے اوپر ٹیکسٹ بکس بن رہی ہیں, اور امپلیمنٹ لاسٹ ایئر وہ ہو چکا ہے اگست میں زیادہ تر جگہوں پہ پاکستان کی. اور اب اس سال یہ ہے کہ 6 سے 8ویں کا جو نصاب ہے وہ بھی رول آؤٹ ہو جائے گا, کتابوں کی صورت میں, ٹیچر ٹریننگ کی صورت میں, اسسمنٹ فریم ورک کی صورت میں. تو وہ ساری چیزیں اس میں ہونے جا رہی ہیں. ڈاکٹر افشان نے جو بات کی تھی کہ شاید اس طرح ڈائلاگز نہیں ہوئے ہیں, تو میں وہ بتانا چاہتا ہوں. شاید میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں اس طرح سے نہیں بتا پائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پچھلے 2 سال سے ایک ایک شہر میں ایک ایک جگہ پہ ایک ایک کریکولم ڈپارٹمنٹ, ٹیکسٹ بک بورڈز, اور وہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں, وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں, وہ چاہے مدارس کے لوگ ہوں, انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جس طرح سے ان کو لوپ میں لیا گیا ہے, جس طرح سے ان کو شامل کیا گیا ہے. تو وہ سارے اس کے اندر شامل رہے ہیں. ان کے اپنے ہاں کانفرنسز ہوئی ہیں, 4 دن کی کانفرنسز ہوئی ہیں. اس وقت ہم نے پاکستان کی 36 یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں, کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یونیورسٹیز میں کریکولم پہ ڈیبیٹس ہوں گی, وہاں پہ ڈسکشنز ہوں گی, وہاں پہ وہ اپنے طور پہ اس پہ کروائیں گے, مختلف قسم کے مذاکرے کروائیں گے, سیمینارز کروائیں گے, اور وہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی حال ہی میں دسمبر میں پورے پاکستان میں ہر کونے میں, گلگت سے لے کے اور کراچی تک, اور لاہور سے ملتان, اور تمام جگہوں پہ وہاں پہ پالیسی ڈائلاگز ہوئے ہیں. اور ان پالیسی ڈائلاگز میں اچھی بات یہ ہے کہ جہاں کریکولم کے لوگ آئے ہیں, وہیں ٹیکسٹ بک بورڈز کے لوگ, ان کے ماہرین, اس کے اندر پھر دیگر سٹیک ہولڈرز, جس میں پیرنٹس, اور پہلی بار یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس بھی شریک ہوئے ہیں.
ملتان میں فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کاؤنسلز جو بنی ہوئی ہیں ان کے لوگ اس کے اندر آئے اور انہوں نے بھی آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. سو دے ٹاک ٹو اس اینڈ دے ٹاکڈ اباؤٹ کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور جہاں تک کامیاب ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس انداز لوگ اس کی تعریف اس انداز میں کر رہے ہیں کہ جہاں ایک بہت مہنگی کتب اور ایک وہ کوالٹی ٹیکسٹ بکس ان کی پہنچ سے بہت دور تھیں, اب وہ بہت بہتر ہو گئی. سو سفر جاری ہے اینڈ وی ویلکم ایوری ون آن. تھینک یو سو مچ سہیل عزیز صاحب. آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں پورا سفر بتایا اور پورا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا. گریڈ 1 سے 5 تک, اور پھر 6 سے 8 تک, اور 9 سے 12 تک ابھی پروسیس میں ہے. آپ ہمارے یقیناً ہمارے ساتھ رہیں گے آخر تک, چونکہ بہت سارے کویشچن اور کیوریز آئیں گے. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں, میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کون کون سے اسٹیک ہولڈرز تھے جو پرائیویٹ اسکول سے, پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے جن کو انگیج کیا گیا, اور پھر پبلک سیکٹر سے کون کون سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو منسٹری کی ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ لمس کو انگیج کیا گیا, آخان یونیورسٹی کو انگیج کیا گیا, کیمبرج کو انگیج کیا گیا. لیکن شاید پاکستان کے جو ایجوکیشن یونیورسٹیز کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں پر بی ایڈ اور جہاں پر بی ایس ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزیں کروائی جا رہی ہیں, پراپرلی شاید وہ اس پروسیس میں انگیج نہیں ہوئے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے 36 یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یوز کی ہیں, لیکن وہ جو 1 سے 5 تک کا جو کریکولم کا پروسیس تھا شاید وہ اس میں انگیج نہیں ہوئے. 6 سے 8 تک کا جو کریکولم کا پروسیس تھا شاید وہاں پر بھی انگیج نہیں ہوئے. تو آپ تھوڑا سا ہمیں ہائی لائٹ کریں گے کہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں. اور پھر ایک اور چیز کہ جو ڈسٹرکٹ لیول میٹنگز ہوئیں ایجوکیشن کے اوپر, یا یہ انفارمل میٹنگ تھی, یا ڈی پی آئی جو ہے سوری جی اوور ٹو سہیل صاحب. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سہیل صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ایکچولی. سہیل صاحب تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گئے. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نرگس ہیں یونیورسٹی آف سرگودا سے. میرا خود ابھی چونکہ گلا تھوڑا خراب ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر نرگس آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے سہیل بن عزیز صاحب کو سنا, اور آپ نے خود بھی پرائمری لیول پہ کام کیا ہے کریکولم کے حوالے سے. تو تھوڑا سا ہمارے سے شیئر کیجئے کہ کیا ہے جو آپ کے پاس فیکٹس ہیں, جو ڈیٹا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد. Thank you so much, sir, for providing me a chance, taking me on the board to talk about this pertinent topic. Dr. Afshan Huma Saiba ko maine suna. She raised very valuable comments and points. سر نے بھی بہت ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں, اور آپ کے سوال سب سے زیادہ ویلڈ تھے, جن کا جواب میں بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ دیں گے. اچھا, talking about me and my part, basically when we talk about the education system, for me education system is basically depending upon 3 major pillars. One basically concerned with the policy, plans, curriculum development, which may include the physical resources as well. And the second one is the administration and management. The third and the most important, or you can say the crucial pillar of this whole education system is the teacher. Basically, whatever you have decided, whatever you have planned, whatever you have developed the books, ultimately all these things will come to the teacher to implement all these things. So the teacher is the most important part for me, because he or she is basically translate all these things and bring those students towards this all teaching and learning process. Well, one important thing which I want to mention is basically the norm and the culture where we are living. And Dr. Saiba also mentioned about the locale. So the overall,
the education purpose, the purpose of the education is basically to prepare someone for the next life, or you can say the our generation for the future life. Education में teachers training, talking about the teachers training जो इस वक्त जो भी आपने सवाल भी पूछा है, I will like to talk about only the Punjab. पंजाब में हमारे पास B.Ed ऑनर्स, ये 2 प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली, एक टीचर के हवाले से कि भाई ट्रेन किया हुआ टीचर है। इससे पहले CT और PTC था जो कि एब्सोल्यूट हो चुके हैं। अब टीचर्स ट्रेनिंग वो पार्ट है, अगर हमने उसे इग्नोर किया या उसे सही तौर पर नहीं कैरी आउट किया तो चाहे जितनी मर्जी हमारी अच्छी बुक्स हैं, जितनी अच्छी मर्जी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनसे उस तरह के डिजायर्ड आउटकम्स नहीं हासिल कर सकेंगे जो हमने डिसाइड किया है। My work is basically regarding the didactic of particularly mathematics, English, and science, as well as regarding the pedagogy. These are 2 different terms, pedagogy and the didactics. Recently, you can see a study was conducted by AIOU and it was published in the daily newspaper also. That study also confirmed my already done studies results. The SLOs mean the students' learning objectives. Every level, every grade, there are the students' learning objectives. We are deemed to achieve those objectives. My studies results says that, for example, I've conducted the studies on primary level, at primary level, at middle level, even at university levels also. The level of the students, what they have achieved, especially at the 5th grade, that is not exactly what we are basically expecting from those students. For example, the skills we are basically teaching them in mathematics, science, and English. Those learning objectives, basically, तो हमें ये है ना कि जो learning objectives हमने decide किया वो हमें achieve होने चाहिए, वो हो नहीं रहे. And this is also a fact that there is a huge dropout rate at primary level. Approximately हमारा जो inscription level है वो पहले ही कम है. 75% students जो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाते हैं. 25% जो है बच्चे पहले ही स्कूल में दाखिला कभी नहीं लेते. और इस 75 में से भी 50% बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं after primary level, after 5th grade. The reason of that failure basically lies, that dropout reason is basically lies in the failure rate. The failure rate among the student is very high. Approximately, you can say, in my study I conducted, I found that only 8 or 6% students could have achieved the learning objectives which were decided for the grade 5. Mostly students, 68%. डॉक्टर नरगिस, आप ये कह रही हैं कि जो सेट किए हैं स्टैंडर्ड ग्रेड 5 के लिए मैथमेटिक्स के, वो 6% लोग उस पर मतलब पूरे उतरते हैं, यानी 6% लोगों ने वो अचीव किया है. 94% जो है उनके लेवल से 5th ग्रेड से नीचे हैं. 5th ग्रेड से सब नीचे हैं. और जो है इसका मतलब ये हुआ कि और वो ग्रेड 2 के बच्चों का लेवल है वो 38% जो है सर, 68% जो है वो ग्रेड 3 तक पहुंचे, 2 और 3 तक. और ओनली जो है 26% बच्चे जो हैं वो ग्रेड 4 का मैथमेटिक्स के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्किल्स हम डेवलप करना चाहते हैं, वो वहां तक पहुंच पाते हैं. तो सिर्फ 6 से 8% वो बच्चे हैं जो कि ग्रेड 5 का जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं वहां जो 5वीं का निसाब है, वो 5वीं के बच्चे 6 से 8% उसको अचीव कर सके हैं. जी, इससे ज्यादा नहीं कर पाते. बाकी जो है वो नीचे आते हैं.
بالکل. اور یہی اسٹڈی جو ہے اسی طرح کے ریزلٹ جو ہے نا سر باقی سبجیکٹس کے لیے بھی انگلش کے لیے بھی یہی ہے. ہاں سائنس کے لیے کچھ بہتر ہے, وہ اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس میں چونکہ ذرا تھوڑا روٹ میمورائزیشن جو ہے وہ کام چل پڑتا ہے, لیکن میتھمیٹکس میں میمورائزیشن نہیں چل پاتا ہے. انگلش میں آپ کو پتا ہے انگلش بیسیکلی لینگویج, اور لینگویج کی 4 کمپٹنسیز ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس ریڈنگ ہے, رائٹنگ ہے, اسپیکنگ ہے, لسننگ ہے. اور سب سے پیتھیٹک سچویشن جو ہے سر وہ ہماری اسپیکنگ بھی ہے. تو ہاں یہ ہوا کہ ہم نے انگلش کمپلسری کر دی گریڈ 1 سے 5 تک, لیکن جو ابھی میڈم نے بھی جو ڈاکٹر صاحبہ نے لوکیل کو آئیڈینٹیفائی کیا ڈیموگرافکس میں, اس سے کہوں گی اسکول جو ہے نا ویریشن جسے آپ نے بھی مینشن کیا وہ بہت زیادہ ہے. پبلک اسکولس بیسیکلی جو ہمارے گورنمنٹ پبلک اسکولس ہیں these are also varied from ٹارٹ اسکول ٹو you can say the دانش اسکول. اب آپ اس کی ویریشن دیکھیں کہاں ٹارٹ اسکول ہے اور کہاں دانش اسکول ہے, دونوں جو ہیں وہ پبلک اسکول ہیں. 6 7 8 سٹیپ ہیں. ہاں جی بالکل, اس میں بے شمار اور بھی چلے ہیں, جیسے ہمارے اس کے آتے ہیں ماڈل اسکول آ جاتے ہیں, کمپریہنسو اسکول آ جاتے ہیں, پائلٹ اسکول آ جاتے ہیں, ویسے میونسپل کمیٹی کے انڈر رننگ والے, یہ سارے گورنمنٹ اسکولس کی ہیں فارمس. یہ گورنمنٹ اسکولس کی اتنی ویریشن ہے سر. اینڈ دین think about the variation in the private schools, which starts from 2 to 3 room school to elitist school, elitist English school for example. You can گلی محلہ میں انگلش میڈیم اسکول کھلے ہوئے ہیں, وہاں سے لے کر جی سٹی اسکول سسٹم ہے, بیکن ہاؤس ہے, بیکن ہے, ہاؤس ہے, ہیڈ اسٹارٹ ہے, ایچ ایس این ہے سر, یہ ساری رینج جو ہے سارے پبلک ہے. بالکل یہ بھی پرائیویٹ اسکولس ہیں نا سر. تو یہ جو رینج کی ویریشن ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہماری یعنی ملٹیپل سسٹمز, وی ہیو ملٹیپل سسٹم آف ایجوکیشن ان آور کنٹری, اینڈ آئی ایم ٹوٹلی یہ مدرسہ سسٹم از آلسو دیز آر 3 اسٹریمس. اب مدرسہ سسٹم کو 2007 آئی تھنک پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھوڑا رجسٹرڈ کرنے کی کوشش کی گئی مدرسہ کو, تاکہ انہیں بھی ہم جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں لے کر آئیں جو ہمارا نیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے. اس میں بھی تقریباً جو ہے قریباً جو کچھ مدرسوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا, باقی ابھی بھی ان رجسٹرڈ مدرسے چلتے رہے, جیسے آپ نے کہا درس نظامی ہے. تو اب بالکل نیشنل کیریکولم از دا نیڈ آف دا ڈے. بالکل ہمیں اگر ہارمونائزیشن چاہیے اور اگر ہم نے ون نیشن ہوڈ ڈیولپ کرنی ہے, وی نیڈ ون کیریکولم. بٹ ون کیریکولم اس سے پہلے یہ تو ایک فائنل ہے نا, اس سے پہلے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, آر وی ریڈی, ہیو وی پونڈر آر attention towards those situation. For example ابھی میں نے تھرڈ اور موسٹ پاورفل پلر ٹیچر کی بات کی ہے, تو ٹیچر ایجوکیشن جو ہے کیا ہماری اس قابل ہے. نمبر 2, جو آلریڈی گورنمنٹ اسکولس میں ٹیچرس جاب کر رہے ہیں, مائی بھی اس میں بہت سارے کچھ پرانے ٹیچرس بھی ہوں جنہوں نے سی ٹی اور پی ٹی سی کیا ہو, میٹرک پاس کیا ہو یا ایف اے پاس کر کے وہ اسکول میں اس وقت ٹیچر لگے میں تو وہ چل رہا ہے پی ٹی سی سی ٹی تو چل رہا ہے سندھ میں. جی سندھ میں چل رہا ہے, پنجاب میں نہیں. اب پنجاب میں یہ ختم ہو چکا ہوا ہے. لیکن اور جب کے ہم پی کے میں نیشنل کی بات کرتے ہیں تو سندھ شامل ہے, بلوچستان شامل ہے, گلگت بلتستان شامل ہے, کے پی شامل ہے, کے پی شامل ہے, پنجاب سب شامل ہے. اور کے پی کے میں تو ٹیچرس ٹریننگ کے اب ہم نے کمپلسری بھی نہیں رکھا کہ کسی بی ایڈ کی ضرورت ہے ہمیں کسی اسکول کی جاب کے لیے. سو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جو پروونس ہے وہ آزاد ہے, دے آل آر انڈیپینڈنٹ ٹو ٹیک دی ڈیسیژنس. بٹ نیشنل ہارمونائزیشن ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, لیا بھی ہوگا. دیٹ از ناٹ مائی پارٹ, انہوں نے کیا ہوگا. میرا پارٹ جو ہے میں نے یہ دیکھنا کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں چاہے وہ پہلی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں یا اب یہ سنگل نیشنل کریکولم ہے, کیا میرے بچوں کو وہ چیز آ گئی ہے جو پڑھانا چاہ رہے ہیں ہم, جو کتابوں میں لکھی ہے, اور کیا انہیں وہ پڑھایا بھی گیا. یعنی میری پیڈاگوجی پر کوشچن ہے. ہاں ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے 6 ہفتے کا کوئی کورس کروا دیا, 2 ہفتے کا. ابھی بھی یہ سنگل نیشنل کیریکولم پر قائد جو انسٹیٹیوشن ہے, قائد اعظم جو ٹیچرز ٹریننگ کا انسٹیٹیوشن ہے پنجاب میں, انہوں نے ٹریننگ کروائی ہے ٹیچرز کی سنگل نیشنل کیریکولم میں. Is that training is sufficient of 1 week or 2 weeks?
And there is another thing which we can say, the digitalization of the education. That is also one of the most important thing at the moment if we want to continue up to the international standards. अच्छा, अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि जो टीचिंग की क्वालिटी है, क्या वो एक मेन रीजन है इस सारे फेलियर का? नंबर 2, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया जी डॉक्टर नरगिस, मुझे अभी बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए होगा आपसे कि जैसे ये फरमाया अपना सुहेल साहब ने कि उन्होंने 36 यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज किया है, ऑन बोर्ड लिया है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि जो प्रोसेस हुआ है, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी है, कि लम्स को और आगा खान यूनिवर्सिटी को इंगेज किया गया है पाकिस्तान से, और जो बाकी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इस पर काम कर रहे हैं, उनको इंगेज अभी तक मेरी इतला के मुताबिक नहीं किया गया। आप थोड़ा सा बताएंगे, हाईलाइट करेंगे कि क्या उनको इंगेज किया गया? नहीं सर, हमारी यूनिवर्सिटी को कोई एंगेज नहीं किया गया। मेरा ये ख्याल है कि जो स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रेलेवेंट है, वहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे जो टीचर्स ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन को कैरी आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाए तो हम जाहिर है हम ये हेल्प करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो हैं इसको इग्नोर किए बगैर, ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर किए बगैर आप कोई भी चीज जो है या जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं कर सकेंगे। उसका सक्सेस रेट हमेशा कम ही रहेगा। हमारी पॉलिसीज जितनी भी बनी अब तक, उनका फेलियर की रीजन ही है कि हमने ग्राउंड रियलिटीज को देखकर वो पॉलिसीज नहीं बनाई हैं। हम हमेशा से कहते रहे कि जी हमें लिटरेसी रेट 100% करना है इन 5 सालों में। अभी तक तो हम 68% क्लेम कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचे, 100% पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। जो है जो अपना नाम लिखना जानता है और वो उर्दू में नाम लिखना जानता है, और हम जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ जा रहे होंगे तो शायद अभी बहुत सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें रीशेप हो रही होंगी। अब देयर इज अनदर थिंग सर, ये प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ आवर होल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो कवर करते हैं। यानी हमारी टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है बच्चों की, उनकी एजुकेशनल नीड्स को कैरी आउट जो कैटर करते हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूल्स करते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे बेसिकली चार्ज इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी। 22.8 मिलियन बच्चे तो अभी स्कूल में ही नहीं है, एज जो है वो तो 22.8 मिलियन तो आउट ऑफ स्कूल है। अभी डॉक्टर नरगिस आपकी तरफ आता हूँ दोबारा, और डॉक्टर अफशान की तरफ भी मैं दोबारा आता हूँ, लेकिन डॉक्टर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद साहब वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के। ब्रेड एंड बटर इनका ओढ़ना बिछोना जो है वो प्लानिंग है एजुकेशन की और हेल्थ की। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो अभी आपने डिस्कशन सुनी, जो अभी आपने डिबेट सुनी, जो भी आपने फैक्ट शीट सुनी, आप मेंबर भी हैं एनसीओसी कमेटी के, और आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या ये जो खासकर डॉक्टर नरगिस साहिबा ने फरमाया है कि ग्रेड 5 के बच्चे के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो 6% उस पर अचीव कर रहे हैं, और बाकी जो है वो उससे 68% जो है वो तो 2 ग्रेड का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा कॉग्निटिव लेवल इतना डाउन चला गया है, या हमारा जो पॉलिसी है उसमें और हमारी कॉग्निशन में कोई रब्त नहीं है? ये कौन से पैरामीटर हैं, या खास करके कोविड ने हमें इतना डैमेज कर दिया है? तो थोड़ा सा हमें हाईलाइट कीजिए, इनसाइट दीजिए सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही रेलेवेंट आपने डिस्कशन जो की है, और ये बड़ा टॉक ऑफ द टाउन भी है। I will say that majority of the people in the country, they have been involved in a very diversified form of education. So there was extremes of variance in elementary education, in basic Montessori and early education, and then up to the level of, I think, intermediate. The education system is very, very heterogeneous. When it comes to the higher level, like the university level, BS and MS, there is a lot of coherence. There is because there is an HEC, the Higher Education Commission. The problem which exists, and it is very rightly pointed out by Ms. Nargis, that there is a variance, and you cannot deal everybody
into one yardstick. So there is a process to it. Whenever we want to do some reform, it doesn't mean that we will do it in one night or 1 month or maybe just 1 year. Even 1 year is not enough. You just see the reforms of the educational reforms of the 1930s and 40s. The very famous Professor Dewey, he just opposed this strict conservative education system to a new form of pedagogy. And it took a decade for even the Americans to understand the new concept. So in order to implement this, even this single national curriculum, there has to be a process. It is not correct that you just think something and there are a lot of people who are of your school of thought, and you have some very high level, you can say cognitive. I will not say cognition level is different, because the initial schooling of the government school versus the private school and the philanthropy charity schools and plus a lot of other informal schooling in Pakistan. There is no one standard yardstick to measure that. So if you do not have a proper measurement tool, how can you think of developing something which will be assessed after 1 year or 2 years, and you expect that the variance will not be like this, the 6% and 68%. So for me, the most important thing is initially they should have, and currently also, and there's no doubt, I am all for a single national curriculum. I do not say, and I think most of the people are not against SNC. The problem is this: we are not against a single national. That's a very good idea as far as idea is concerned. The problem is in order to solve a problem, you are getting into much more problems. That is not the way of addressing a problem. That in order to address one problem, you create another problem. This is not the solution. So if you want to have a homogeneity or a sort of a one thought process of a intermediate or a matriculate or a middle school alumni or student who has passed, if you want to do something like that, there are multiple things need to be done. It's not just the national curriculum which has to be developed. Then the next step is, like somebody was mentioning here, that there are so many trainings which were done and there was much more training which will be done. The issue is you need to debate these things openly. You should be more inclusive of a lot of other school of thoughts who should be involved. It is not just the government stakeholder. You can do it for the government schools, but like you yourself mentioned, if the 50% of the beneficiary is out of the government system, like if in any case, if a government reforms happens to government sector hospitals, what about the private sectors? So similarly, the education is also in this country, unfortunately, it is mostly, I will say predominantly a private sector involvement. So we cannot deliver, we cannot achieve universal primary education, universal education without the support of primary schools. You see, in COVID, we have seen that they are very much, I will say, they are very much compliant to whatever the state says. They are open to discussions. They always came to our discussions and they closed the schools. They did what we asked them to do. So there was quite a compliance level, very high compliance level in case of COVID for NCOC as well as for all these private school entities and their representations. Similarly, in single national curriculum also, I will say that it is important. Yes, it should be done. Yes. But the process which should be undertaken should be more inclusive, more holistic, taking on the board more people. And there is another problem in this country. When people start doing politics, when the opposition as well as the government, they start doing politics on such a noble subject as even as education, what you can imagine will happen to the country. So if we are thinking, I will assure that the government is thinking very nice, very positively of improving the outcome of education of this country. I agree. I admit that. But if the opposition is doing, or the other provinces who are not on board, they are doing something against it, you should do a process of dialogue.
That is how an educated group of people discuss with each other. That is how we discuss our solutions. So if everyone is interested in improving the outcome of education, if everyone is interested in improving the quality of education, which by no means is optimal at current level. If the government says that the quality of education is not good and we want to improve it, they are right. But again, how will you improve that? It is not what you want to do. It is also important is how you want to do it. So in my opinion, most important consideration for the government or any government, federal or provincial or even at the district level, and all the private sector as well, you should be discussing it at a broader level, at more sort of, I will say, horizontal integration instead of verticalization of everything, and then state versus private sector. And it's not just for private sector. There is a very big not for private sector involved in education. Don't forget about the religious schools as well as other schools who are in huge number. I don't know the exact number, but they are very huge number of schools who also do this formal education. So you are actually, you have to take care all of these components, and then like we have a very positive outcome of the COVID management by NCOC with the education institutes, I think this SNC or single national curriculum can also be implemented and expanded when we start doing a dialogue and a provincial level discussion. And I'm all available for SDPI and anybody else if you want to proceed further in order to achieve the outcomes of the quality of education. We are all in it at the same time. Thank you, Shahid. Sir, thank you so much for your very valuable input and insight. Sir, आपसे एक और क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा हूँ इससे पहले कि मैं डॉक्टर अफशान की तरफ दोबारा जाऊँ, और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ के लाइन डिपार्टमेंट है और गैजेट्स हैं, तो क्या एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम में बाकी के कंपोनेंट किस हद तक इम्पोर्टेंट है? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना, रिमोट एरियाज में स्कूल तो बन गया, अब वहां पर पहुंचना कैसे, एक्सेसिबिलिटी कैसे है, टीचर्स ने कैसे पहुंचना है, और फिर जो उसकी क्वालिटी मैकेनिज्म है, वो क्वालिटी फ्रेमवर्क, थोड़ा सा बताइए कि क्या हमें उसकी तरफ भी कुछ जाने की जरूरत है? जी डॉक्टर शहजाद। Whenever we talk about service delivery, when we talk about public services, whenever we are discussing public service, it definitely needs buildings, it needs equipments and other resource materials, the teaching aids. You need teachers and you need support staff, and definitely you need a lot of transportation and other things. So it's almost the same when it comes to education and health. These both are services which are used by everybody. And I think education is even more important than health, because health is used only in Pakistan by those who need it at some time. Maybe in 1 year, they will need it at some point in time. But education is needed by everybody. So when your child is 3 years or 4 years of age, he or she will start looking for they will go to a hospital when he will get a cough or a dyspnea or diarrhea or anything else. But he will definitely need a school in any part of this country when he's of age. Similarly, the buildings mostly they are available in the urban areas. So there is a bias in education system in our country. There is a absolute bias which we call it as pro-urban. So everything is in the large metropolitan urban areas, which creates congestion and a lot of other issues as well for the students and for the administrators as well. Number one. Number two, majority of it is, of course, out of pocket. So you need to pay the fee out of your pocket, because the state education services, they do not reach to more than 50% of the people. I think the right number you will be knowing, but in health services, we say 20% of the health services are by the government sector, 70% are by the private sector. I think the same will be in the education as well. Majority of the services will be by the private sector. So there are issues when we go to the private sector. Now that is a very big issue for the states. Number one, they are not able to reach every child. Number one. Number two, even the private sector does not have that standard which should be there.
You know, when the regulation arm of a state, of a government is weak, just because of the fact they are too much into the service delivery themselves, then they cannot regulate anyone else. So if the government if the education departments of the government sector, they are so busy in managing their own schools and their own issues, who would actually regulate the private sector? So the regulation of the private sector is a very big dilemma, like the regulation of the health sector. So if we are too much into service delivery, and nowhere in the world, by the way, nowhere in the world, the service delivery is the mandate of the state or the government. You just go outside Pakistan, you will find that all the developed countries, they have delegated this to a lot of other private sector entities, and they make sure that the poor is not gets impoverished. So there is a mechanism of protection of the poor, so that they do not get more impoverished, for health and for education. So the most important thing is in the private sector as well, that on one side you need buildings, you need faculty, you need educational aids and other things, and on the other side you need to regulate the other sector, which is private sector. So if the government is busy in providing its own school system, then in a school education system, and that is also not up to the mark, people, you know, I still remember, I am an alumni of a government public school of Atak and a government college. At that time, the private sector was almost non-existent, and everybody was going into the public sector. But the way the population has expanded, the cities have expanded and outgrown the most of the developed areas. Now there is a dilemma that there is a huge private sector. So the government has to do two things. One, to fund their own medicals, on schools, and also to regulate the private sector. For me, it is very difficult for such governments to regulate the private sector, because the capacity issue of the regulation is not up to the mark. So you need a lot of checklists and a lot of yardsticks for measurement. That is a big issue. And it as you said, it is almost the same as in health. Sir, thank you so much for another insight. और आपने जिस तरीके से बात की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम की जो मुताबिकत की बात की, यकीनन ये मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट को इस तरफ जाने की ज़रूरत है कि वो, जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, रेगुलेटरी सिस्टम जब तक नहीं बनता तो कैसे हम सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देंगे, ये एक बड़ी सोचने की बात है। मैं दोबारा डॉक्टर नरगिस की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर नरगिस, आप एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं, आप जो डिवोटेड हैं, और ख़ासकर जो प्राइमरी एजुकेशन पे आप काम कर रही हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझती हैं, फिर इंटरनेशनली आप इंटरनेशनल क्वालिफाइड हैं फ्रांस से। दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सिंगल नेशनल करिकुलम होगा? मेरे ख्याल में 4, 5, 6, इससे ज़्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, बाकी कंट्रीज़ को देख लें, सिंगल नेशनल करिकुलम मुझे कहीं नज़र नहीं आता। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं हाईलाइट करें कि क्या यही एक वाहिद रास्ता है नेशनल इंटीग्रेशन का और नेशनल डेवलपमेंट का और एसडीजीज को अचीव करने का, कि अगर हम हर चीज़ को बालाए ताक रख के सिंगल नेशनल करिकुलम पे चले जाएं, या जैसे डॉक्टर शहजाद साहब ने कहा, जैसे डॉक्टर अफशान ने कहा, जैसे खुद जो है वो जुनेद साहब ने बात, सोहेल साहब ने बात की कि मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने की ज़रूरत है और ग्रेजुअली उसमें जाएं। तो क्या आप समझती हैं, हमें थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि जो इंटरनेशनल है वर्सेस नेशनल, तो जो सिंगल नेशनल करिकुलम की इम्पोर्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, डाइवर्सिटी ऑफ जो डेमोग्राफी है, और जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कितना इफेक्टिव होगा? आपका माइक बंद है, आपका माइक ऑफ है। थैंक यू। आई एम ऑडिबल नाउ? यस। अच्छा, पहली तो बात ये है कि कितने मुल्क हैं जो सिंगल नेशनल करिकुलम कर रहे हैं, ये मुल्कों की तादाद तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बात कर सकती हूँ कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, इसमें 27 से ज़्यादा मुल्क हैं, इसमें ये वेलफेयर स्टेट्स भी अपने आप को क्लेम करती हैं, और इनका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। फ्रांस का मैं बात करूं तो फ्रांस का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, और
सारा जो एक फेडरल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है सारे निज़ाम को, और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है, बहुत ना होने के बराबर है। कोई इसलिए आपको चंद नज़र आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है, और उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि वो इंग्लिश में पढ़ ले, क्योंकि हर एक तो फ्रेंच में नहीं कर सकता, और उनकी अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन सिस्टम, अगर आप इन जितने भी ममालिक हैं ना, इनके देखें, ये सारे के सारे अपनी लैंग्वेज में आप दे रहे हैं जितनी भी एजुकेशन है। इंग्लैंड चले जाएं इंग्लिश में है, फ्रांस चले जाएं फ्रेंच में है, जर्मन चले जाएं उन जर्मन लैंग्वेज है, इसी तरह इटली चले जाएं इटालियन में दे रहे हैं। ये सारे ममालिक अपनी जुबान में दे रहे हैं, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों उनकी अपनी जुबानें। और अब हमारे जो सिंगल है, नेशनल हाँ, अब सिंगल नेशनल करिकुलम में क्या हो गया, कुछ इंग्लिश है और कुछ उर्दू है। जैसे इस्लामियात हमारी उर्दू है, मुताला पाकिस्तान या वो सोशल स्टडी है वो हमारी उर्दू है, साइंस हमारी इंग्लिश है, मैथमेटिक्स हमारा इंग्लिश है। और उसके रीजन हम ये देते हैं कि क्योंकि आगे हमारा एफएससी लेवल पर जब हम जाते हैं या उससे आगे जाते हैं तो ये सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट होने होते हैं, इसलिए हम अभी से उनको इंग्लिश में एजुकेशन देना शुरू कर दें। अच्छा, मैं इस बहस में तो नहीं जाऊंगी कि इसके आगे इंग्लिश में क्यों, हमारी जुबान में क्यों नहीं, वो तो बहरहाल एक और डिबेट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पूछी है ना सर, वो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन या ऑन बोर्ड का। वो तो जो सर थे सुहेल बिन अजीज साहब, उन्होंने बताया कि डिबेट्स चला रहे हैं, कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी करिकुलम का मतलब बुक्स नहीं है। हालांकि बुक्स भी छपी हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक बुक्स जो हैं पिछले साल इम्प्लीमेंट हो चुकी नहीं है। कई प्राइवेट स्कूल्स ने उसको अडेप्ट भी कर लिया है, मजबूरन करना पड़ा, कुछ ने उसको अडेप्ट करने से इनकार कर दिया कि हमने नहीं करना। अब मसला क्या होता है यहाँ पर, जो एक बुक्स बनी है, मैंने खुद पर्सनली जो है उन बुक्स को देखा है, बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर मैं पढ़ाना चाहूँ अपने बच्चों को तो मुझे ये किताबें बहुत अच्छी लग रही हैं। इसमें मटेरियल बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। ये सारा आप ये देखें कि ये जनरल साइंस का है, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में यहाँ दिए गए हैं, आई एम सॉरी टू से, मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, मैक्सिमम जो ज़्यादातर टीचर्स हैं, उन्हें खुद नहीं आते। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं खुद भी विजिट किया हुआ है पब्लिक स्कूल्स में। वहाँ पे जो जनरल कैडर का जो टीचर होता है, जिसने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, उसको इंग्लिश दी जाए और इंग्लिश पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स दिया जाए मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, इस्लामियात पढ़ाएगा, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है मैथमेटिक्स पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, क्योंकि उनको कंटेंट नॉलेज नहीं है। दो तरह की चीजें आ गई ना, एक कंटेंट नॉलेज है, एक पेडागोजिकल नॉलेज है। हाउ टू टीच, पेडागोजिकल नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज वही होगा जो हमारे पास इस किताब में मौजूद है। अब ये जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बता रही होती हूँ कि नॉलेज जब हम कह देते हैं ना, कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा चेन में एग्जिस्ट करता है, यानी वो कहीं ना कहीं बेस रखता होगा और आगे कहीं ना कहीं किसी चीज से कनेक्ट होता होगा, और इसमें गैप आते हैं। अब सेम इज द केस विद द टीचर्स। जो टीचर बेचारा पढ़ा रहा है, अगर उसके अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, उसको कंटेंट नॉलेज नहीं आता, चाहे जितना मर्जी वो पेडागोजिकल नॉलेज को जानता हो, जितने मर्जी फिजिकल रिसोर्सेज वो लगा दे, वो बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा वो नॉलेज। यानी दो तरह से हमें टीचर्स को ट्रेन करना है, एक हमारे न सिर्फ पेडागोजिकल बल्कि कंटेंट नॉलेज भी देना चाहिए। अब कंटेंट नॉलेज जो है, मैंने क्यों प्राइमरी को इस वक्त फोकस किया है, मेरा जो लेवल है इस स्टडी को करने का वो अबव मैट्रिक है, एफएससी तक मैंने इन सारी चीजों को स्टडी किया। प्राइमरी जो है वो जो बच्चे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाहिए सर, अगर हमने वाकई ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है और मार्केट को मीट करना है। जॉब मार्केट में आप लेके जाए ना अपने बच्चों को, हमारे ग्रेजुएट्स ही बन सर, उनको जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि जो जॉब मार्केट की स्किल्स है ना रिक्वायर्ड सर, वो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही उन्हें। ये चेन चल रही है सर, प्राइमरी से टिल
यूनिवर्सिटी तक जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं जॉब मार्केट के लिए, वो स्किल्स हम डेवलप नहीं कर पाते. जो जर्नल स्किल्स है वो नहीं डेवलप कर पाते. सबसे मेजर जो स्किल हमें चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग. वो हमारे बच्चों को नहीं आती, इसमें बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं. अब ये चीज स्टार्ट कोई सर यहाँ से नहीं हुई यूनिवर्सिटी से, ये स्टार्ट होती है सर प्राइमरी स्कूल से. वहां से गैप्स हमारे चलते हैं. टीचर्स को मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ सर कि बच्चा, इसमें और भी फैक्टर्स है डेमोग्राफिक, ये नहीं है कि सिर्फ टीचर है. इसमें सर डेमोग्राफिक्स में उस वो किस लोकेलिटी से, पेरेंट्स उसके पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उसका घर का माहौल कैसा है, ये सारे सर फैक्टर्स हैं. और हाँ, मेल न्यूट्रिशन भी है सर, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि अगर वो मेल न्यूट्रिशन है उन बच्चों में तो वो क्या समझेंगे और कहाँ उनका ध्यान आएगा. प्राइवेट स्कूल में जहाँ किताबें अच्छे हैं, जहाँ टीचर मेहनती हैं, जहाँ उनकी जो है लाइबिलिटी को मैयर किया जाता है, वहाँ पर सर बच्चे भी जो हैं वो वेल न्यूट्रिशन फैमिली से आए होते हैं. डॉक्टर और ये भी नरगिस, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर चाह रहे हैं कि आप उन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करें. और उनमें से एक दो चीज़ें तो जो थी, डॉक्टर नरगिस सरगोधा यूनिवर्सिटी से हैं और प्राइमरी एजुकेशन इनका फोकस भी है. इन्होंने बताया कि जो ग्रेड 5 का मैथ है, जो उसका सिलेबस है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के और एक एक साल के अंदर एक एक क्लास का करिकुलम जो है उनको
जिस सिंध में we were in Multan and we were told कि जी हमें हमारे इस्लामाबाद के बच्चे का या लाहौर के बच्चे का भी हक है कि उसको भी ये बातें पता हों। सो गोया यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि उन्हें एक होलिस्टिक एक पिक्चर दी जाए कि पूरा पाकिस्तान ये जो गुलदस्ता है इसके क़याम में और इसके बाद इसको मजबूत बनाने में इसका जो इस्तेहकाम है उसमें किस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर काम किया है। वो खा मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखते थे, उसमें ख़वातीन का किरदार है, उसमें हमारी जो इस्लाम के अलावा दीगर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी भाई बहन हैं, उनका क्या किरदार है और बहुत ही एक अलग से वो खास तौर पे दिखाया गया। सो दैट शोज के डाइवर्सिटी को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। और आप बार बार देखेंगे कि आपको नजर आएगा करिकुलम के अंदर, टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पांसिबिलिटीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। सो ऐसा कतन नहीं है कि कहीं सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो डाइवर्सिटी को किल करने वाला है, बल्कि उसको और ज्यादा मजबूत करने वाला है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ना सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी तरफ और थ्रो कर रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को थ्रो करने से पहले मैं अपनी कोलीग मिस आयशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ 6 के करीब क्वेश्चन है, अगर वो थोड़ा सा उनको तरतीब दे कि उनको स्क्वीज करके उसको थ्रो कर दें कि वो किन पैनलिस्ट की तरफ हैं, ताकि हम उनका जवाब ले सकें। और बाय द टाइम जब तक आयशा आप ये काम कर रही हैं तो मैं साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ
جی کہ یہ جو لینگویج والا بیریئر ہے تو اس کو لینگویج میں کیسے لے کے چلیں گے. ڈاکٹر افشان نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, ڈاکٹر نرگس نے بھی کیا کہ یہ مطلب دنیا میں ٹھیک ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم شاید 5-6 کنٹریز میں ہے یا بہت سارے کنٹریز جو اس کو فالو کر رہے ہیں, وہاں پر ان کی اپنی لینگویج میں وہ بات چیت ہو رہی. تو ہمارے پاس تو ہم آدھے تیتر آدھے پٹیر نہیں ہو گئے, وہ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟ ایک بڑا جینوئن کنسرن ہے. جی دیکھیں, لینگویج کا جو ایشو ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی, اور ایک بات وہاں بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھی گئی ہے ہماری پالیسیز میں کہ کلاس روم ٹیچنگ اس لینگویج کے اندر ہونی چاہیے جو بچوں کو سمجھ آتی ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے, بہت سادہ سی بات ہے, ریسرچز بھی یہی کہتی ہیں, اور ہر ایک کو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ, آئی ایم فرام کوئٹہ بیسکلی, بلوچستان سے میرا تعلق ہے, مجھے یاد ہے کہ میری کلاس روم کے اندر 5 سے 6 لینگویجز بولنے والے بچے بیٹھتے تھے. تو اگر وہ 5 سے 6 لینگویجز بولنے والے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ بعض اوقات, تو کتاب کی زبان کوئی نہ کوئی تو ہونی چاہیے. کہ آپ نے کتاب کی کوئی زبان ایسی رکھنی ہے جو کہ انٹر پروونشل موبلٹی کی صورت میں بھی آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہ ہو. آپ کا استاد خواہ وہ خود اس کی زبان کوئی بھی ہو, جو اس کی ریجنل لینگویج ہے وہ کوئی بھی ہو, مدر ٹنگ اس کی کوئی بھی ہو, لیکن کم از کم وہ ایک ایسی زبان ہو جس میں ہم پڑھا سکیں. سو وہاں پہ یہ ڈیسیجن لینے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 کانفرنسز ہوئیں, میٹنگز ہوئیں, ملٹیپل اس کے اندر ریسرچز کنسلٹ کی گئیں, اور آخر میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہمارے سائنسز کے سبجیکٹ ہیں, سے میتھمیٹکس اینڈ سائنس, کیونکہ ان کو آگے جا کے اب تک ہمارے پاس شاید بہت بڑی تعداد میں, شاید اتنی جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا زیادہ ہمیں ذخیرہ تحقیق کا, ریسرچ کا اتنا میسر نہیں ہے کسی ایک زبان میں ہمارے یہاں جو بولی جاتی ہیں جتنا ہمیں انگلش میں ملتا ہے. سو اس پریکٹیکلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن واز میڈ کہ جی ہم یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کو ہم انگلش میں کرتے ہیں, اور باقی رہ گئی بات اسلامیات کی, باقی رہ گئی بات سوشل اسٹڈیز کی, یا جو چھوٹی کلاسوں میں جسے ہم جنرل نالج کہتے ہیں, دیٹس اے مکس آف سوشل اسٹڈیز اینڈ سائنس, اس کی, یا ہماری ریلیجس ایجوکیشن جو 5 مذاہب کے لیے ہم نے کی تھی, اور اب اس میں ہم نے بدھزم اور پارسیز بھی ایڈ کیے ہیں. سو 7 مذاہب کا الگ الگ ایک کریکولم بھی بن رہا ہے, اور 5 مذاہب کا بن چکا ہے, 2 کا اور بن رہا ہے. سو وہ کم از کم ایک ایسی لینگویج میں ہو, اردو میں ہو, اور بعد میں کتابیں اگر فار ایگزامپل کلاش میں, کیونکہ کلاش کمیونٹی بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہے, وہ ایک جگہ پہ موجود ہیں, اور وہاں اگر ان کی زبان میں کتابیں بنتی ہیں, سو نتھنگ از بیٹر دین دیٹ. تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا بہت وضاحت کے ساتھ بہت شروع سے کہ کتابیں اگر صوبے, علاقے, کوئی سکولز, اگر وہ صوبے خاص طور پہ وہ اگر کسی بھی زبان میں بنانا چاہتے ہیں ریجنل لینگویج میں, تو وہ بنا سکتے ہیں. البتہ اردو کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم اگر ہم اپنے بچوں کو ملٹی لینگول نہیں بنا سکتے, بائی لینگول تو بنائیں اس سوسائٹی میں, اس ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 21st سینچری کی, کہ کم از کم انہیں انگلش اور پھر اپنی زبان جو اردو, اس پہ فخر بھی کر سکیں, اور اس پہ ان کو کسی نہ کسی حد تک عبور بھی ہو. سو دیٹ از دا بیسک تھنگ جس کی وجہ سے یہ سولوشن نکالا گیا. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب, آپ نے ہمیں جس انداز میں یہ ایجوکیٹ کیا ہے. ابھی کچھ کوشچنس ہیں وہ لے لیں ہم, اور اس کے بعد پھر میں جو فائنل تھاٹس ہیں SDPI کیسے سوچتے ہیں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی مس عائشہ. تھینک یو سر. سر پہلا کوشچن تو سہیل صاحب کے لیے میرا خود کا ہے. ہم لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے ایک ویبینار کیا, اور ہم اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں اینیمل رائٹس پہ. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا کریکولم ڈسکس کرے کہ ہمارے اقلیتوں کے کیا حقوق ہے, ہمارے اتحاد کی کیا اہمیت ہے, لیکن کیا ہم دیگر جو جاندار ہیں کیا ان کے بارے میں بھی سنگل نیشنل کریکولم میں بات کریں کہ نہیں. اس کے علاوہ میرے پاس 2 کویشچن ہیں. ایک ڈاکٹر ندا کامران کی طرف سے ہے, آئی تھنک کسی حد تک وہ ایڈریس ہو بھی چکا ہے. ان کا ایز اے پیرنٹ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے بچوں کو جب یہ میڈیم آف انسٹرکشن چینج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنی پروگرس اس طرح سے مینٹین نہیں رکھ پا رہے جیسے پہلے تھی. تو لاجک کیا تھی میڈیم آف انسٹرکشن چینج کرنے کے لیے, اور اگر یہ چینج ہونا تھا تو یہ شروع سے لائک پلے گروپ سے ہونا چاہیے تھا, انسٹیڈ آف یہ کہ آپ نے 5ویں گریڈ یا 3ری گریڈ کے ایک بچے پہ نیا امپوز کر دیا ایک نئی لینگویج کو. اسد سیٹی صاحب کا کویشچن ہے کہ اس پاکستان SNC align with UN SDG اور UNICEF's early childhood development, UNESCO's GPWF etc.
which standards was Mr. Sohail referring to for inclusion in SNC, and what is the single point agenda of SNC? I think इन दो के जवाब ले लें तो मैं फिर तीसरा क्वेश्चन आपको बता जी जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। सोहेल साहब आपकी तरफ ही हैं जी सब तीर। जी नहीं, थैंक यू जी, थैंक्स फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस से ये फायदा होता है कि आपको मजीद बातें बताने को मिल जाती हैं जो कि बहुत छुपी हुई हैं, जिसकी वजह से गलतफहमियां होती हैं। एनिमल राइट्स की जहां तक बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि इस्लामियात का जो हमारा करिकुलम है, पहली बार ये हुआ कि उसमें हमने एक नया स्ट्रैंड शामिल किया है, ईमानियात, इबादत, एतकादात और उसके साथ चलते हुए, अखलाकियात के साथ चलते हुए हमने एक स्ट्रैंड शामिल किया जिसका नाम रखा है इस्लाम और दौर हाजिर के तकाजे। अब इस्लाम और दौर हाजिर के तकाजे में हमने उन्हें ये बताया कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्हें समझाने की कोशिश की है कि वो कैसे ट्रैफिक कवानीन का इस्तेमाल, उसका एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो वाटर कंजर्वेशन है वो क्यों ज़रूरी है। इसी तरह जानवरों के एहतराम की, वहाँ पे जानवरों का ख्याल रखने की, पौधों का ख्याल रखने की, जो जानदारों की बात हो रही थी इंसानों से बढ़ के आगे, जहाँ रवादारी की हमने बात की है, जहाँ पे जो निजरान के मसीही थे उनका जिक्र किया गया है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिसालें दी गई हैं कि किस तरह से रवादारी को उन्होंने फरोग दिया, वहीं पे जानवरों की, उनका ख्याल रखने की, हुकूक की, और इसी तरह से पौधों का ख्याल रखने की अहादीस की मदद से और कुरानी आयात की मदद से, कुरान सुन्नत की रोशनी में वो इसके अंदर शामिल किया गया। सो आई होप कि वो एक अच्छा रिजल्ट लाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज में ग्रेड 2-3 में अगर आप देखें करिकुलम में, यू विल फाइंड दिस, और ग्रेड 1 में इवन के जहां जानवरों की बात की गई, उनके हुकूक की, उनका कैसे ख्याल रखना है। सो एज अप्रोप्रिएट अंदाज में इसको मुख्तलिफ लेवल्स पे शामिल किया गया है। सो आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू कि इसके ऊपर हमने बड़ा काम किया है। दूसरा जो सवाल था वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हवाले से, बिल्कुल सही बात है कि जब भी कोई तब्दीली होती है, जब भी कोई इस तरह की आप बड़ी तब्दीली कर रहे होते हैं, लैंग्वेजेस की हो, बाकी हो, सो वो जो पैंग्स हैं वो यकीनन होते हैं और प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है पेश किसी ना किसी को। लेकिन ये सोचिए कि इसका जो इम्पैक्ट है एक बड़े पैमाने के ऊपर, कि जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ये कहिए कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस वजह से एक नुकसान का शिकार होते थे और पीछे रह जाते थे कि उन्हें सब कुछ उर्दू में पढ़ रहे हैं और आगे जाके इंग्लिश में पढ़ना है, तो वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं। एंड एट द सेम, वो जो अपॉर्चुनिटीज की बात है कि आगे जस्ट बिकॉज के वो इंग्लिश नहीं बोल सकते या इंग्लिश में लिख नहीं सकते तो इस वजह से वो मार्क आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि हम अपने बच्चों को देखते हैं, मैं अपनी फैमिली में बच्चों को देखता हूँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हैं, तो उनकी उर्दू की हालत ज़ाहिर देख के यकीनन रोना आता है कि वो जिस तरह से वो लिख रहे होते हैं और जिस तरह के, और ऊपर जाके भी अच्छी खासी ऊपर की क्लासों में पहुंच के उनकी उर्दू वो उस लेवल की होती है कि छोड़ें, उसका तो कोई एग्जाम नहीं ले रहा है ना। जैसे हम कह रहे हैं मैथ्स में 5 में बच्चे पहुंच गए, उनका लेवल अभी तक ग्रेड 2 का है, तो उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो फॉरेन सर्टिफिकेशन की जब एग्जाम्स दे रही होती है, सो उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज लेती है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये एक चीज चल रही है, तो उस वजह से वो डिसीजन लेने की जरूरत पेश आई कि आप कहीं ना कहीं वो डिसीजन लें और उसके बाद उस पर अमल करवाएं। सो ये दो बातें। तीसरी बात थी एसडीजीज की। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम वो डॉक्यूमेंट है, वो हमारी रिफॉर्म है कि जिसको मैं आपको आज बड़ी खुशी महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि 11 एसडीजीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको टच कर रहा है। खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा एसडीजी 4 की, और 4 में भी स्पेशली बात करना चाहूंगा 4.7 की, कि जहां पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप की, हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी थिंकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, सो ऑन। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। एंड सेम ना सिर्फ करिकुलम के अंदर बल्कि उसको टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी उन सब चीजों को लेकर आए हैं। तो मैं वही जैसे आपसे कहा कि रवादारी की बात जगह जगह पे है, और कंजर्वेशन की बात जगह जगह पे है, और जंगलात की हमने बात जगह जगह पे की है। इस तरह से जो हमारी मरीन लाइफ है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे की है, एंड सो ऑन। सो एसडीजीज को हमने पूरी तरह से मद्देनजर रखा है। एसडीजीज पे हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस करवाई नेशनल लेवल पे, और उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसकी रोशनी में हमने काम किया। एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू टेल यू अनदर थिंग कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन यूएनएफपीए के साथ मिलकर हमने उस पर काम किया। लाइफ स्किल्स को स्पेशली अभी जो इवेंट्स हुए हैं, खासतौर पे कसूर के वाकयात हुए और इस तरह की चीजें हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन पे बात करें, और उसमें हमारा फोकस डेफिनेटली
वो इस चीज़ के ऊपर है कि चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर हमारा फोकस है कि उनको कैसे बचाना है, उनको कैसे हमने बताना है। सो उसमें UNFPA और कुछ हमारे साथ और ऑर्गेनाइजेशन, एक्ट पाकिस्तान, उन्होंने मिलकर हमारे साथ काम किया है। हमने पूरे पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग सेशंस इसके किए हैं, चतराल से लेके और कोयडा तक और कश्मीर से लेके और कराची तक और हर जगह। और अब सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल उसके ऊपर बन रहा है, सो ऑन, और उसको करिकुलम में, किताबों में भी जगह जगह उसको इनकलकेट किया। सो जहाँ इंटरनेशनल मुआहिदों की बात है, चाहे वो चाइल्ड राइट्स हों, चाहे वो SDGs हों, या हमारा अपना आईने पाकिस्तान हो, ये तमाम हमारी वो बेसिक चीजें थी जिनको हमने मद्देनजर रखा है। बहुत शुक्रिया जी। आयशा, कोई और एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? ये जेनेरिक है सारे, टाइम क्योंकि सॉरी मेरा माइक म्यूट था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन गुलामिर साहब का है। उनका कहना है कि सर्वे सजेस्ट दैट 65% ऑफ टीचर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशन which highly impact low learning outcomes. Single national curriculum could not focus on teaching practices. Besides, teaching education institutions are offering degrees to those who are not who are far from teaching skill, knowledge, and ability. So as Dr. Nargis pointed, if our teaching practices are at the same level, how are we going to differentiate between nation curriculum and single national curriculum? National curriculum, I think, if he meant that. जी सर। जी, इस पे देखिए बहुत अहम बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करें, दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट स्टैंडर्ड्स एंड देन टेक्स्ट बुक्स। एक इज द नेम ऑफ बिग रिफॉर्म, और उस रिफॉर्म के अंदर टीचर ट्रेनिंग इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रादर, बहुत बहुत अहम है। सो अगले स्टेज के ऊपर अब हमने कम से कम ग्रेड 1 to 5 में हमने ये किया था कि जब हमने करिकुलम बनाया तो उस वक्त हमने उसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमने बनाए, और क्योंकि वक्त कम था तो ये भी हुआ कि ट्रेनिंग्स हुई। सिर्फ पंजाब में 3 लाख से ज्यादा टीचर्स की ट्रेनिंग हुई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसका स्टैंडर्ड क्या था या क्या वो फुलफिल करता है वो सारे रिक्वायरमेंट्स, या हमारे जो टीचर ट्रेनिंग के इदारे हैं जो प्री सर्विस टीचिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, या इनसेट्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें यकीनन इस पे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। टीचर लाइसेंसिंग पे बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर अभी काम कर रही है। और जहां कोविड को हम देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है, वहां ये भी हुआ कि जो ऑनलाइन हमारी फैसिलिटीज हैं, ऑनलाइन टीचिंग जो है वो न्यू नॉर्मल है। सो उसको यूज करते हुए, जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, एडटेक का जितना ज्यादा इस्तेमाल इन दिनों हुआ है उसको यूज करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आगे, और इसके ऊपर काम हो रहा है कि टीचर ट्रेनिंग के ऊपर मजीद काम किया जाए। As far as this claim is concerned कि 65% of the teachers are not happy with their profession, I must say कि शायद तादाद इससे कहीं ज्यादा हो। जिन्होंने 35% ने कहा है कि मुतमईन है, मुझे शक है कि उन्होंने भी मुकम्मल सच नहीं बोला। सो मसला ये है कि वो उन हालात से ताल्लुक है, उन चीज़ों का कि उनको किस तरह के मिलते हैं वो हालात, मुआशरे में ओवरऑल उनका मकाम क्या होता है, लोग उनको किस तरह से देखते हैं, कितने वेल ऑफ हैं वो, अपनी फैमिलीज को किस तरह से वो चला पाते हैं, सो ऑन। तो वो सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिस इज नॉट लिमिटेड टू सिंगल नेशनल करिकुलम एज आई सेड। सो यहाँ पे ये हो सकता है कि रिफॉर्म्स के अंदर हम एक अच्छा टीचर ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल बना लें या एक पूरा प्रोग्राम बना लें, हम एक CPD फ्रेमवर्क की बात कर लें एंड सो ऑन। सो ये यहाँ पे हो सकता है। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। थैंक यू सो मच एक सोहेल ज़ेबा साहब। आई हाशमी थिंक और मोहम्मद अमाद फारूक का क्वेश्चन क्लब कर रही हूँ। आपने बात की कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से भी अभी हमारे करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। ये आप क्लैरिफाई कर देंगे कि ये इस्लामियात में ये एज अ चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं या इसके लिए कोई सेपरेट कोर्स शुरू किया गया है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस्लामियात में नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां बात है वो हमारे मुख्तलिफ मज़ामीन में, अगर आप देखें उसको हमारी जनरल नॉलेज के अंदर, तो वहां पे हमने उसकी बात की है ग्रेड 1 to 3 में। ऊपर आके ग्रेड 4 5 में सोशल स्टडीज में उसकी बात है, जहाँ पे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स की बात की गई है। वहीं पे हमने ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है उसकी बात की है। ऊपर के ग्रेड्स में अगर आप जाएं तो जहां हम अपने आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने उसकी बात की है। एंड प्लस इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ हम इसलिए भी यूज करते हैं कि बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो बेहतर हों, प्लस जो उनकी अफेक्टिव डोमेन है उसको भी एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं टॉपिक्स की सूरत में, मुख्तलिफ थीम्स की सूरत में वहाँ पे भी यूज होता है। सो आप वो देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। खा वो अगेन वो पौधों से मुतालिक हो, जानवरों से मुतालिक हो, टैक्स वक्त पे देने से मुतालिक हो, वोटिंग से मुतालिक हो, डेमोक्रेटिक रवैयों से मुतालिक हो,
اور کانفلکٹ مینجمنٹ سے متعلق ہو اینڈ سو آن. تو یہ آپ کو ملے گا بڑی ڈیٹیل میں. کانفلکٹ مینجمنٹ بڑی خوبصورت سی ہم نے السٹریشنز بھی بنوائی ہیں, اور گریڈ 3 کی اگر آپ ہماری جنرل نالج کی یہاں کی بک دیکھیں گے کریکولم میں تو وہ موجود ہے, لیکن اس کے اندر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بہت چھوٹے لیول پہ بچوں میں کانفلکٹ مینجمنٹ کا کیا مطلب ہے, اینڈ اس میں ان کو انسٹرکشنز دی گئی کہ ہاؤ دے شوڈ resolve their issues if any conflict arises any time. تھینک یو سہیل صاحب. عائشہ آئی تھنک ہمیشہ ٹائم کنسٹرین رہی ہے ہمیں جب بھی کوئی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے دس از the first step and or the first drop. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ جو ڈسٹنگوش پینلسٹ آج جوائن کر سکے ان میں ڈاکٹر نرگس صاحبہ کا, ڈاکٹر شہزاد خان صاحب کا, سہیل بن عزیز صاحب کا, ڈاکٹر افشان کا بہت شکریہ. ہمیں رفیق طاہر صاحب نہیں جوائن کر سکے. سہیل صاحب آپ کے وہ جو ایکس جوائنٹ ایڈوائزر ہیں بیکاز آف دا کووڈ, آئی وش کہ وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہم ان سے بھی کچھ لرن کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. صرف 2-3 گزارشات یہ کہ یہ جو کام گورنمنٹ آف پاکستان کرنے جا رہی ہے یہ بالکل آسان نہیں. چینج لانا بڑا مشکل کام ہے, اور جب چینج کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. لیکن ہماری صرف ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس نیشن بلڈنگ پروسیس میں سارے سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں, خاص کر اکیڈیمیا کے جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نمائندگی ہمارے خیال میں بہت کم ہے, ان کو لے کے چلیں. سول سوسائٹی کے کچھ ادارے جو پالیسی انٹرونشن کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں, اور خاص کر یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے شاید یہ بہت جلدی اچیو ہم نہ کر سکیں, لیکن اس کی جو اسٹرگل ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. جیسے ڈاکٹر شہزاد صاحب نے کہا کہ وہ بالکل اویلیبل ہیں, حاضر ہیں. ایس ڈی پی آئی یہ سمجھتا ہے, جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تھا, ایس ڈی پی آئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک بیسک ایجوکیشن کمیشن ہونا چاہیے, جو بیسک ایجوکیشن کمیشن میں سارے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہوں اور وہ سارے اس پہ ایکسٹینسو ڈسکشن کریں, ڈیبیٹ کریں, اور اس میں جو اس کے آؤٹ کمز ہیں ان کو انالائز کیا جائے, اور پھر اس کے بعد پالیسی فارمولیشن کی طرف جایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اڈاپٹ کرتے چلے جائے. شاید یہ تھوڑا سا چیلنجنگ کام ہوگا, مشکل کام ہوگا, لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کاز گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے اس میں یقیناً یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. ایس ٹی پی آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو بی پارٹ آف دس جو انٹرونشن ہے, جو یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور ساتھ میں جو باقی یونیورسٹیز ہیں, جیسے آپ نے کہا 36 یونیورسٹیز کو آلریڈی آپ نے آن بورڈ لیا ہے, میں بھی کچھ اور یونیورسٹیز کو اگر ضرورت ہو تو ضرور لیں, لیکن ایکسٹینسو ڈسکشن جو ہیں وہ دیٹ آر دا ریکوائرمنٹ. اور اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات, ہم اپنے پینلسٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کے کوشچن کیوریز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج 24 جنوری کو جو انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, پاکستان بھی اس میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے اور جو قومی دھارے میں ایجوکیشنل ریفارمز لانے کی ضرورت پہ کام کر رہا ہے. تو ویری اسپیشل تھینکس ٹو سہیل بن عزیز صاحب اینڈ آل ادر ڈسٹنگوش پینلسٹ, ڈاکٹر نرگس, ڈاکٹر افشان, ڈاکٹر شہزاد صاحب, مائی اون کولیگس عائشہ, نان صاحب اینڈ ریسٹ آف دا ٹیم. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر جلدی اسی سلسلے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.